हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आ चुका है एक नई वीडियो के साथ। और यार आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लोगन पॉल वर्सेस कॉफी विला। तो भैया हो क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि मैंने भी इतना नहीं किया मतलब अंदर से रिसर्च। तो क्या हुआ, पहले कॉफी विला ने ना लोगन पॉल के खिलाफ ना क्रिप्टो स्कैम की निकाली, जो मतलब एक साल पहले उनका कोई क्रिप्टो के प्रोजेक्ट था जिसके वजह से वो नहीं कर पाए। और कॉफी विला ने उसके खिलाफ तीन वो निकाली थी, बैक टू बैक वीडियो और प्लेलिस्ट बनाई थी। तो जो लोगन पॉल है उन्होंने जब कॉफी विला ने जब मतलब मैसेज किए, डीएम वीएम्स किए, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया था। और बाद में उसके बाद लोगन पॉल मतलब ऐसा निकल के कोशिश करने वाले कि क्रिप्टो सॉरी कॉफी विला कैसे उन्हें व्यूज के लिए यूज करें या फिर एलिगेशन में उनके अपने क्लियर करेंगे। तो यार वीडियो दिखता है, मैं बात करूंगा इसी के लिए। और मैं बता दूं, मैं इन वीडियो का ओनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रिएक्शन दे रहा हूँ। मैं दोनों का चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप दोनों की देख सकते हो, कॉफी विला की भी और लोगन पॉल के रिस्पॉन्ड की भी। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई CoffeeZilla. I watched her three-part series called Investigating Logan Paul's Biggest Scam, and like many on this platform, you have successfully used my name for views and money. While you're भाई पहली 9 सेकंड हुए हैं वीडियो के, आप देख सकते हो। पर लोगन पॉल कह रहे हैं कि मतलब ना कॉफी विला को यूज करे। पर अगर आप कॉफी विला की ना जो चैनल देखोगे ना, कॉफी विला ही का वही है बंदा मतलब जो ना जिसका काम ये यूट्यूबर के जो स्कैम होते हैं ना उनको मतलब खोल के दिखाना। मतलब वो उसका पूरा चैनल उसी के बेस में कि मतलब लोगों के स्कैम करता है। तो यार मतलब व्यूज के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यार कोई सा भी यूट्यूबर छोटा बड़ा वो कॉफी विला बनाता है और उसकी देखना एक बार मेहनत बहुत ज्यादा करता है। तो भाई ये स्टार्टिंग में ही लोगन को ये क्या कर रहा है मतलब समझ ही नहीं आ रहा। work used to be impartial, your addiction to clicks has clouded your judgment, and you've made very real errors with very real repercussions. Coffee, you took a shot at my reputation. So in this video today, I'm going to be defending myself with facts, something that you have gotten in the habit of twisting as you continue to morph from an investigator. भाई देखा तूने कितनी जल्दी साला नॉन प्रोफेशनल लग रहा था पहले के 9 सेकंड में, फिर उसके बाद क्या प्रोफेशनल टाइप का लग रहा है भाई, स्ट्रेट फेस। To a gossip channel. You see, CoffeeZilla tried to work with law enforcement in the past, but his work was described as not anchored to truth and often speculative. He is a lopsided journalist with an agenda, and he's nothing more than the Keemstar of crypto and finance. But as a जो लोगन पॉल बोल रहा है जो कॉफी विला, मतलब इसका कोई सबूत है? सबूत तो देने का भाई है। just telling you, I'm going to show you some of the core discrepancies that I caught in CoffeeZilla's investigation. Coffee, you interviewed the तो मतलब इसने कोई भी सबूत नहीं दिया कि इसने अभी अभी पिछले उसमें बताया ना कि जैसे कि देखो यहाँ पे बताता हूँ कहाँ पे है कि नॉर्थ एथिक कॉफी विला की वर्क कर रहा है। पर भाई कोई सबूत तो दे उसके लिए, कोई फोटो होगी, कोई कुछ होगा यार। ऐसे ही बोल रहे क्या ये भाई ये तो आधा है। that I caught चल in ठीक है। CoffeeZilla's investigation. Coffee, you interviewed the developer who stole the game code, fled to Switzerland, and held it hostage for $1 million. Well, his name is Zach Kelling. Surely, as the internet detective that you proclaim to be, you would know that he spent time in prison for multiple felonies, one for aggravated robbery, armed robbery at a liquor store, and the other for, surprise, obstructing the legal process. I can see why you kept him anonymous. Who will be calling Z here. I guess among many things, it doesn't surprise me that he lied about having 30 engineers and a $50,000 a week burn rate. On my end, I have 30 engineers. I'm burning $50,000 a week. Which, side note, is how this delusionist landed on the $1 million code ransom, but it turns out he only had 3 engineers. Wouldn't someone with journalistic तो उससे क्या फर्क पड़ता है अगर उसका 57 integrity, no मतलब 50 नहीं है? source, had not only an agenda, but a fondness for orange jumpsuits? Or did you just hear what you wanted to hear and moved on? Because even if you're lying to yourself, Steven, you still have to believe it. And I know what you're thinking. इससे कॉफी पिला का क्या होता है, उसने जैसे कि नाम छुपाया। नाम छुपाने का तो मतलब ये होता है ना कि एक प्राइवेसी टाइप बना ली होती है। और उससे कॉफी पिला को क्या मतलब होता है कि अगर उसने ये मतलब बताया कि मतलब 50 है 3 है, मतलब इतना नहीं है यार। What type of idiot would work with an unsavory individual like Zach Kelling? I guess that's what I get for trusting the team that I relied on to vet and manage. अरे भाई पहले तो ये बंदा करता है, वो होता है कि जो बंदा उसको पागल बना के मतलब पैसा काट के निकल जाते हैं, प्ले बॉय जो भी है, और फिर बोलता है कि अपनी टीम पे भाई ये तो मतलब सीधा ही दे रहा है, मतलब सीधे ही गुलाटी मार रहा है अपने बात से। पहले तो कि उसको मतलब अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम देखोगे ना कॉफी स्टार पे कहते हैं कि वो मतलब उसने ये नाम नहीं बताया। नाम भाई सेफ्टी रीजन के लिए हो सकता है और इससे कॉफी में लगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑफ ऑल जो उसने बोल रहा है कि 50 एडिटर और जो 3 ही एडिटर है, ये जो इंस्टाग्राम की 2 फोटो दिखा दी इन्होंने, इससे भी भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी इसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि इसने एक ऐसे बंदे को खोला जो स्विंडलर था, जिसने पैसे गोल करके निकल गया। और क्या चाहिए, इसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। भाई क्या बकवास है ये। Eddie's hiring process, who has turned out to be a professional con man that I have since learned fooled billionaires, the Mormon Church, the owner of the New York Yankees, and now
me. And surely you knew Emilio, the gentleman गजब who supposedly let his child invest in a cryptocurrency, was allegedly responsible for 2 rug pulls before you interviewed him. So either you missed that or you knew it and failed to let the public know. Why? Because it was a clear sign that he was also untrustworthy. You seemed pretty excited when the guy told you that he couldn't hatch the eggs. Wait, you can't even hatch? No, I'm telling you, it's just a picture. You're kidding! You can't hatch? You're kidding. You can't hatch? You can't hatch? Yeah, 1 second of research would prove that to be false, as you can definitely hatch eggs and even breed your animals. Click on that. Oh, we got a duck. And as you pointed out in your fine print, cross-hatching was available on ETH at one point, but you perpetuated the opposite as truth with your chest out. Basically, nothing worked. And by the way, Guy, almost all NFTs are just pictures. I'm telling you, it's just a picture. And surely a real ये क्या था भाई मीम Guy, almost all NFTs are just pictures. I'm telling you, it's just a picture. And surely a real internet detective would not break criminal and civil laws in trying to get information, right? So why have you allowed the illegal recording of Jeff's phone call without his permission? And then more like an internet criminal, post it online. And it was interesting. It was like, this is wild. Now, although you didn't verify any backgrounds, substantiate any evidence, took multiple criminals' words as truth, and broke laws, you still published the defamation. However, unlike you, the blockchain doesn't lie. So let's highlight some things that you did point out. Crypto King Jake stole $6 million. True or not, we had already removed him from the team when we realized he was a bad actor and his motives were purely financial. Conman Eddie, lead developer, stole $1.7 million. True or not, when we learned he was a bad actor as well, he was immediately removed from the team. While myself and Jeff sold तो मतलब अभी लोगन पॉल ने जस्ट लिटरली एडमिट करा कि मतलब उन्होंने कॉन मैन को मतलब जो पैसा निकाल के लेगी उनको एक तो वो करा, क्या नाम है, हायर करा, उसके बाद पैसे उन्होंने जब खींच के निकाल लिए मतलब सारे पैसे लेके उड़ गए वो, तो तब उन्होंने निकाल दिया, और तो उनकी गलती नहीं है, मतलब लोगन की गलती नहीं है भाई. nothing and made nothing as verified through investigation and the blockchain. Jeff, Logan's manager, to my knowledge, never sold. Neither did Logan Paul. I repeat, Jeff and I made no money and will never make any money on Crypto Zoo. In fact, we only lost money trying to pick up the pieces. As has been the case. भाई तूने पैसे डुबाया बंदों के, उसे फर्क नहीं पड़ता. तूने मतलब स्टार्टिंग में जो क्रिप्टोजो का जो भी प्रोजेक्ट है उनमें बंदों के पैसे होने थे और तूने भरोसा दिया है, और तूने कोई कौन मैन को मतलब आर्टिस्ट को हायर करता है, फिर उसके बाद दबाने की कोशिश करता है, एक तो रिस्पॉन्ड नहीं देता बंदा, और फिर जब पूरे एलिगेशन बाहर आ जाती है तब एक अपोलॉजी टाइप वीडियो बनाते हैं, फिर काउंटर टाइप वीडियो बनाते हैं जिसमें कभी भी किसी भी एक्शन के वो ले ही नहीं रहा, हर चीज को मतलब किसी ना किसी के मतलब डाल रहा है. जैसे कि अभी देखा होगा तुमने, वो पहले तो साले के कॉफी जिला पे नाम डाल रहा है कि उसने नाम नहीं दिखाया एडिटर का, फिर अपने वो दिखा दिया कि उसने लीगल एक्शन लेगा. इलीगल चल इलीगल रिकॉर्डिंग का तो मानता है, पर इतना कुछ मुझे लगता नहीं डेफेमेशन कुछ बनेगा भी, अगर बनेगा भी तो ज्यादा कुछ नहीं होगा मुझे लगता है. फिर उसके बाद एक्सेप्ट ना करने के कि उसकी गलती और बस एक एडमिट करता है. Projects, the space is unfortunately ripe for bad actors to infiltrate projects that start with even the best intentions. Jake the Snake is no longer affiliated with Crypto Zoo, and we hope the money he reappropriated was worth ruining his reputation. Conman Eddie is being investigated by a higher authority that I cannot speak on. As you can imagine, I was not cleared from legal to discuss much of this, including the legal process being undertaken and the criminal investigations going on during the fallout, but I do appreciate you calling out that rats under my nose stole the game code, millions of dollars, and left Jeff and I abandoned with no team and knives in our back. But even after 12 months of work, you've still managed to overlook one crucial piece of information. See, even though I've said it's coming so many times, you've assumed that Crypto Zoo isn't being made. Who are you to decide when the development timeline ends? I got everything stolen from me in our community, stopped promoting publicly as soon as I knew the extent of the internal issues, took all of the heat on social, and you still published a defamatory hit piece fully knowing I was innocent just so you could enrich yourself in your $10 million studio. Sharp, but deeply unethical, dangerously misleading, and illegal. I suggest you use the money you got from pumping your Patreon to hire a good lawyer. You're gonna need it. And maybe we could have talked about this if you had reached out to me, personally. Not my manager, Jeff, who is not me, Steven, but the first time you did was on Christmas Eve after you released your series so you could rely on false statements and unreliable people used recklessly. एक बात करेक्ट करना चाहूंगा, जो कॉफी जिला उसने
लोगन पॉल को 1 साल पहले भी कर था जब वो इस वीडियो के बना रहा था। आई बिलीव कि यहाँ पे जब तक मैंने पढ़ा था कर रहा था, और इसका जैप भी करा था, और इसने उसमें ट्विटर में भी उसने आई थिंक भेजा था मतलब लोगन से व्यूज के। The subject line was third request for comment. Yeah, not quite. This will be my third time reaching out to you and your team. The first 2 times were through your manager, Jeff. The first 2 times were through your manager, Jeff. Okay, so the last time on Christmas Eve, after the fact, was to me. You have a funny way of twisting things. And I also noticed you left out that part on Twitter. Why hide that? Trust me, CryptoZoo is coming. I will make damn sure of it. And honestly, it 1 साल बाद क्रिप्टो जो आ रहा है, जब पैसा सब पूरा मीडिया सोशल मीडिया उस पे ले रहा, तब 1 साल बाद आ रहा। गजब। sucks that after years of personal reform, going through trials and tribulations, and busting my ass to evolve into a person that I can say I'm actually proud of, you led the charge to drive and monetize a narrative telling millions of people that I'm a fraud or I tried to scam my audience. That is patently false. This video is mainly for my fans and anyone who's on the fence that I hope I can help understand a situation that is tremendously complex but has been oversimplified for both views and clicks. And lastly, CoffeeZilla. I now know your motives with this. Clout and money, good for you, but also you're slimy as so I'm not going to come on any of your podcasts. If you want to come on Impulsive and talk about this, that's fine. You've denied my invitation multiple times. You're still invited. It can be a one-on-one. If not, we're going to handle this ourselves while we continue to build CryptoZoo, and I'll see you in court. कमिंग सून 23-24, मतलब अभी 1 साल और इसका दिमाग खराब करेगा। क्रिप्टो मर गया भाई। 1 साल या 2 साल में जब तक आएगा तब तक पूरा खत्म हो चुकी होगी बात, और ये क्रिप्टो भी खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में 1 इंच का कुछ उसने वो नहीं लिया कि उसने पहले गलत मैनेजर को हायर किया, पैसे ले गए, टीम में गलत किया, वो भी पैसे ले गए, फिर उसके बाद नाम डाला कॉफी विला पे भाई, जबकि उसने 1 साल पहले उनको वो भी किया था कि पूछने के लिए। तो भाई कॉफी विला तेरे को बात कैसे करेगा? या तो इंस्टाग्राम के थ्रू करेगा या फिर तेरे मैनेजर की तरफ करेगा ना। अगर किसी को तुझे बात करनी है, जैसे कि टेक बर्नर करे, तो टेक बर्नर पे तो जानना मुश्किल है ना, तो उसका कोई एसोसिएट तो करेगा ना, नॉर्मल सी बात है। इसमें मुझे समझ नहीं आया भाई। लोगन पॉल बहुत ही तेजी से निकल रहा है, बहुत ही तेजी से, मतलब उसने किसी और पे नाम डाल दिया भाई। एक बार कमेंट पे लुक कर लेते हैं बिफोर करने से पहले, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। कमेंट, इट्स लाइक अ हायरिंग अ टीम ऑफ अ फॉर्मर बैंक रॉबर टू रन अ न्यू बैंक फॉर यू डिजाइन। भाई ये सही बात है, जब पहले कॉन आर्टिस्ट को करोगे तो वीक है। सो रिएक्टिंग आउट थॉट द लोगन मैनेजर इज नॉट ऑलवेज रीच आउट द लोगन को मेक अ परफेक्ट सिन। वाह भाई, बात भी सही है, लोगन का मैनेजर है पर लोगन को बात नहीं करेगा, क्यों पता नहीं। कैन यू इमेजिन अ थ्रेटनिंग समवन आफ्टर बीन स्कैमिंग बंच ऑफ इन्वेस्टर? Threatening a lawsuit doesn't mean you are innocent, just mean that you have enough money to not play by the rule. बात भी है भाई। पूरा ये जो क्रिप्टो का जो निकाला है ना, एक भी हद तक लोगन पॉल का मतलब सिंसियर अपॉलॉजी नहीं लगी। और अगर इसका मैं देखूँ कुछ कैसे दिखता, वो दिखता ना लाइक, और 72 के डिसलाइक है, बट आई बिलीव इसमें बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक है। मैं इसका फोटो डाल दूंगा, कुछ भी नहीं था भाई, बहुत ही टट्टी है, बहुत ही टट्टी, क्या कहूँ मैं इसको। तो चलिए, मतलब अगर आपको भी इसकी वीडियो देखनी है, फिर कॉफी जिला की मैं डालूंगा लिंक और डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, लोगन पॉल के ओरिजिनल के भी, जाके उन्हें देखिए और अपना कमेंट जरूर उनकी वीडियो में लीव करना कि कैसा लगा। भैया चलो मिलते हैं अगली बार, बाय बाय, सी या।